Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 21st of January. In this video students, we will be talking about Startup India marked 9 years recently, and India is at the third position in the startup ecosystem. Then we will be talking about Sanchar Sati application, NBM 2.0 and ICR facility that has been launched to boost the telecom connectivity. Next thing we will be talking about is the ninth edition of the Swachh Sarvekshan. Then Indian Armed Forces has conducted the exercise Devil Strike. Next thing we will be talking about a agreement that has been signed, a fiscal support agreement between these organizations. Next thing we will be talking about an MOU that has been signed to enhance the coordination and information exchange. We will be discussing all these things and many more in detail, so stay tuned with us till the end. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning students, weekly current affairs, monthly current affairs, and topic wise they are uploaded regularly. That gives you a better understanding of the situation of the news that is happening all around the world. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one stop solution for current affairs. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. So students, let's start with national affairs. First thing we are talking about is startup ecosystem in India, and as I mentioned, our country stands at third position in the startup ecosystem. On top it is USA, followed by China, and then our country India. So Startup India has recently completed 9 years with 1.59 lakh startups recognized and 16.6 lakh jobs that has been created with these startups, and that is one of the reason you have seen, and we have also discussed multiple times, that our country or the government is focusing to boost the MSMEs, right? There are multiple startups here, small businesses here, right? When we'll boost them, more and more job opportunities will be created here. So right, this Startup India, that was an initiative of the government of India. It was launched in 2016 and it has recently completed 9 years. Also remember, 16th of January it is observed as National Startup Day. Correct? Take a note of this. Very important. And we saw that almost 1.59 lakh startups have been emerged, and these has been recognized by DPIIT, and India has firmly positioned itself as the world's third largest startup ecosystem. Also, the Startup India initiative being implemented by DPIIT under the Ministry of Commerce and Industry. Then if we look at them, also if we look at some of the key establishments of Startup India, Indian cities like Bengaluru, Karnataka, Hyderabad, Telangana, Mumbai, Maharashtra, Delhi NCR emerged as the major hubs for the startups in India, while smaller cities have increasingly contributed in the entrepreneurship momentum. As of 31st of October 2024, a total of 73,151 recognized startups include minimum one women director, demonstrating the increase of women entrepreneurs also in India. Then if we talk about this Bhaskar initiative, remember DPIIT, they launched this Bhaskar platform, that is Bharat Startup Knowledge Access Registry platform. This is a cutting edge initiative which is a part of Startup India initiative. This initiative aims to streamline and centralize the interactions within India's entrepreneurial ecosystem. This will foster innovation, collaboration, growth by connecting startups, investors, mentors and service providers and the government bodies. Then next thing we are talking about is Startup Mahakumbh, right? This Mahakumbh or Startup Mahakumbh is considered as one of the largest get together of various startups, unicorns, investors and various ecosystem holders under
one roof. The first edition of the Startup Mahakumbh was held in 2024, which hosted more than 1,300 exhibitors and showcased around 10 thematic pavilions. This Startup Mahakumbh, the first edition, or we can say the Startup Mahakumbh, it was inaugurated or organized by whom? It was organized by Associam, NASCOM, Bootstrap Incubation and Advisory Foundation, the Indus Entrepreneurs, and Indian Venture and Alternative Capital Association. So these organizations, they organized this Startup Mahakumbh, the first edition of which was held in 2024. Next thing, our Union Minister Piyush Goyal, he has launched this Prabhav Fact Book and Bharat Startup Challenge on 9th Foundation Day of the Startup India. This Prabhav Fact Book, it is powering a resilient and agile Bharat for the advancement of visionary startups, and Bharat Startup Challenge. These two things was recently launched for at the celebration of the 9 years of the Startup India in New Delhi. Next, remember, Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis has signed a memorandum of understanding with SIDBI to establish 100 crore rupees fund that will help the startups to grow. Next thing, Startup Policy Forum has launched Startup Baithak and Startup Baatcheet to celebrate the National Startup Day 2025, which is observed on 16th of January. This Startup Policy Forum was with the support of DPIIT and Startup India, and they have launched two flagship initiatives as we saw. First is Startup Baithak and second is Startup Baatcheet. So next, students, is Union Minister Jyotiraditya Scindia has launched the Sanchar Sathi application, NBM 2.0 and ICR facility to boost the telecom connectivity. See, Jyotiraditya Scindia, he is our Union Minister of Communication and he has introduced several citizen-focused initiatives. He has introduced this Sanchar Sathi mobile application, then NBM 2.0. NBM is your National Broadband Mission, and the inauguration of ICR facility. ICR is your intra-circle roaming facility, and these things were launched during the Digital Bharat Nidhi funded 4G mobile sites in New Delhi. Right, if we talk about this Sanchar Sathi application, it is a user-friendly mobile application that will enhance the telecom security and empower the citizens. Then this NBM 2.0, that is your National Broadband Mission. This is an expansion of the earlier NBM 1.0, the aim of which is basically to develop the India's digital infrastructure. And under this 2.0, the aim is to connect remaining 1.7 lakh villages and improve the broadband up to 100 Mbps. Right? Take a note of these things. Then apart from this, students, here you can see this. The next thing is some key features of this application, that is Chakshu. This will allow the users to report the suspected fraud and communication such as calls and SMS directly from mobile logs. Citizens can monitor all mobile connections registered in their name to prevent the unauthorized usage, and the user can block, trade, recover lost or stolen devices, and this help can users verify the authenticity of mobile handsets. Next, we saw the NBM 2.0 and it is to develop the India's digital infrastructure, where the aim is to connect remaining 1.7 lakh villages and improve the broadband speed to 100 Mbps. Next is Union Minister Manohar Lal Khattar. He has launched the toolkit for the 9th edition of Swachh Sarvekshan. Right? So Manohar Lal Khattar, he is a Union Minister of Housing and Urban Affairs, and he has launched the toolkit for the which edition? For the 9th edition of Swachh Sarvekshan. Right? This is the world's largest urban cleanliness survey, the aim of which is to basically provide and clean the areas. Right, this is a special category Swachh Sarvekshan League. It has been introduced for the year 2024 that will create a separate league of cities performing well in the cleanliness. Say for example, a particular city is cleaning better, right? The area in that city is being cleaned better, so it will be in the different league. For example, cities have been classified into 5 population categories, that is very small, less than 20,000 population, small 20,000 to 50,000 population, medium 50,000 to 3 lakh population, big 3 to 10 lakh population, and medium plus is more than 10 lakh population here. Each category will be examined based on the population and parameters customized to its specific size and requirements. For each category, awards will be given to clean cities, thus making the new SS inclusive. Right, then here you can see some very small cities. It is
Panchgani in Maharashtra, Patta in Gujarat. Small cities is Vita in Maharashtra, Saswad in Maharashtra. Medium cities Ambikapur, Tripudi, New Delhi, right? And similarly. Moving on, next is Indian Armed Forces conducted the exercise Devil Strike, right? I repeat, which force conducted this exercise Devil Strike? It was conducted by our Indian Army, right? Take a note of this. And in this exercise, Indian Army and Indian Air Force also took part, right? This exercise was held from 16th to 19th of January, and this exercise, correct, it basically, in this, various new equipments, advanced technologies were tested. Next is ISM, CG Power and CPSL, they have signed a fiscal support agreement. ISM, that is India Semiconductor Mission, right? And Mumbai, Maharashtra based CG Power and Industrial Solutions Limited, CSPL, right? That is CG Semi Private Limited. These three organizations, they have recently signed a fiscal support agreement so that India's semiconductor manufacturing sector can grow, right? It is for the fiscal support agreement for supporting India's manufacturing sector, right? So that whenever India's not India's semiconductor manufacturing sector, right? That means if in India, if the semiconductor manufacturing require any kind of funding, so these three organizations will make sure that the funding is not stopped and proper funding is provided to the sector. And also our country India has set a target of reaching $500 billion of worth of electronics production by 2030. Correct. If we talk about India's semiconductor mission, this was launched in 2021 and it was launched with an outlay of 76,000 crore rupees under the aegis of Ministry of Electronics and Information and Technology. Correct. Next is FIU India and NHB. They have signed a memorandum of understanding to enhance the coordination and information exchange. I repeat, FIU India, that is Financial Intelligence Unit of India under the Department of Revenue. They have signed a memorandum of understanding with NHB, that is National Housing Bank, right? And this is to collaborate on various range of areas that includes your information sharing, intelligence sharing, capacity building, risk assessment, and many more, right? Here each party will appoint a nodal officer and an alternative nodal officer to coordinate with each other, sharing various relevant intelligence information from their databases and many other things, right? Take a note of it. Next is international affairs. QS World Future Skills Index 2025 was released. QS is your Quackrelli Simon's World Future Skills Index 2025 was released, and in this index, US has secured the first position, and our country India was on the 25th position. Right? Take a note of this. That is World Future Skills Index. Right? Then here you can see USA first, second UK, third Germany, fourth Australia, fifth Canada, and our country India is at the 25th position. Next thing, if we talk about the skills fit indicator, UK was on top, USA second, third Canada, and our country was on the 37th position. Similarly, economic transformation indicator, if we talk about it, South Korea first, second Israel, third USA, and our country India was on the 40th position. Moving on, next students, next is ILO, that is International Labour Organization's report was released, that is WESO report. WESO is your World Employment and Social Outlook report, right, for 2025 has been released. In this report, the global unemployment rate has slowed down at 5%, right? So the current state of the global labor market is shown here. This report provides an in-depth analysis of the global employment trend, various challenges, and according to this report, the global unemployment rate has slowed down at 5% in 2025, and it is projected to again lower at 4.9% in 2026. What does this mean is that more people will be getting jobs here. The unemployment rate for the overall number of jobs missing stood around 402.4 million in 2024.
Apart from this, the global growth rates remain stable, hovering around 3.2% in 2024 and 2025. Inflation rates have come down from 6.7 in 2023 to 5.9% in 2024, and the global labor force participation rate remained at 61% in 2024. According to the report, the unemployment rate in India is projected to grow by 6.2% in 2024 and 5.8% in 2025. If we talk about ILO, International Labour Organization, who is the Director General here? Gilbert Huangbo, headquarters in Geneva, Switzerland, established in 1990. Moving on, next students, if we talk about the economic survey, we just saw about this. Next is your national economic recovery. See, India is projected to grow by 6.2% in 2024 and 5.8% in 2025. Moving on, next is our External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar was on a visit to Spain from 13th to 14th of January, right? And here you can see he was on a 2 day long visit that was on 13th and 14th of January, and this marks his second visit to Spain and the first visit as an external affairs minister. During this visit, both these countries, India and Spain, they have signed memorandum of understanding that focused on the sports and sustainable urban development. According to the Indian diaspora in space, Union Minister Dr. S. Jaishankar highlighted 2026 has been designated as a dual year to celebrate the cultural exchanges, tourism, advancement in AI between the two nations. Also, here Union Minister Dr. S. Jaishankar addressed the 9th annual conference of space and ambassadors that was held in Madrid, Spain, and the theme of this conference was a foreign policy with our own identity. Moving on, next is Nigeria. They have joined the BRICS as the ninth partner country here. BRICS, that is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Correct. So recently we know that presidency of BRICS is with which country? It is Brazil. Right. So Brazil is having the presidency for 2025, and during this presidency, Nigeria has now become the ninth partner of BRICS. Correct. Take a note of this. Next thing, remember, recently it was Indonesia that became a full member of BRICS bloc. Right? If we see here, other partner countries are Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and now the ninth partner country is your Nigeria. Next is USA has removed BARC, IGCAR, and IREL from restrictive entity list. What are these things that we are talking about, right? So remember, 3 nuclear Indian entities have been removed from the restricted entity list. What does this mean is now India can work on the nuclear front, right? There will be no restrictions. This news was in social media platforms. It was hovering for a very long time, right? And it is a big change and it will benefit India a lot, right? So USA's Bureau of Industry and Security, they have recently removed these 3 prominent Indian nuclear entities from the restrictive entity list. What this will do is this will promote the and strengthen the bilateral ties between India and USA, and will also promote the or also will focus on promoting the advanced energy cooperation. Correct. So here it is Baba Atomic Research Center of Mumbai, Maharashtra. Then ICGAR, it is your Indira Gandhi Center for Atomic Research, and IREL, it is your based in Mumbai, Maharashtra, that is India Rare Earths Limited. Correct. Take a note of this. Apart from this, remember USA, they imposed restriction on more than 200 Indian entities following India conducted nuclear test in Pokhran, Rajasthan in 1998. Right. Next is banking and finance students. Shriram Life Insurance, they have launched Sunishchit Labh Saving Plan. Right, this is a non-participating individual saving plan that guarantees high returns of up to 668% of the total premium paid. This plan offers a combination of savings, life insurance benefits. Right. Also, the individuals that are aged 30 days to 60 years are eligible for this plan with an annual premium starting at
30,000 rupees. Next is India's GDP growth likely to reach at 6.7% in FY26 as per the data released by CHSL. Right here, the report outlined the three main drivers, that is RBI's rate cut, lower crude oil prices, and a normal monsoon. Correct? Take a note of this. If we talk about CRISIL Rating, who is the managing director of CRISIL Rating? Subodh Rai. Headquartered in Mumbai, Maharashtra. Established in 1987. Next is appointments and resignations. Government has extended Robert Gerard Ravi's tenure as the chairman and managing director of BSNL and MTNL. Right? Take a note of this. So, whose term has been extended as the chairman and managing director of BSNL and MTNL? He will be Robert Gerard Ravi, and his term has been extended for another 3 months. Right? He was supposed to retire on 15th of January. Now his term has been extended till 14th of April 2025. Next is books and authors. VP Jagdeep Dhankad has launched the book Parliament, Power, Functions and Privileges, a Comparative Constitutional Perspective. I repeat, Vice President of India Jagdeep Dhankad has launched the book Parliament, Powers, Functions and Privileges, a Comparative Constitutional Perspective in New Delhi. This book was authored by Dr. K.S. Chauhan, a senior advocate at Vice President's Enclave in New Delhi. Next is Amitav Ghosh's new book, that is Wild Fictions. This will address the climate change and societal issues. Right? This book was published by Fourth Estate India at the 41st Dr. C.D. Deshmukh Memorial Lectural and the India International Center in New Delhi. Right? This is Yashobhumi. Right? This book will explore climate change, societal issues, political instability in the time of monsters. Right? Next students, we are discussing important days. National Disaster Response Force Raising Day observed on 19th of January, and it is to mark the foundation of NDRF, that is National Disaster Response Force Raising Day. This is a special force. This comes under the Ministry of Home Affairs, and this year on 19th of January 2025, it was the 20th edition of NDRF Raising Day that was observed. Correct? Take a note of this. Apart from this, here the 10th Battalion of NDRF was inaugurated. Also, inauguration of the National South Campus of the Institute of Disaster Management in Andhra Pradesh was launched. Correct? If we talk about NDRF, who is the Director General of NDRF? Piyush Anand, headquartered in New Delhi. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial in your learning. Which country has recently become the first Caribbean nation to adopt India's popular instant payment platform UPI? It is Trinidad and Tobago, that is TNT. With this TNT, they became the first Caribbean nation to adopt the UPI. Next, which bank has recently launched the multi-currency world travel card, which allow the users to load and manage multiple currencies on a single card? It is Punjab National Bank. Right, this card supports 6 major foreign currencies, that is US dollar, euro, UAE, that is your United Arab Emirates dirham, then Britain or British pound sterling, Canadian dollar, that is CAD, and your Singapore dollar. Correct? That is your Singapore dollar. So these are the 6 currencies that are being supported here. Next, which non-banking financial company has recently partnered with RuPay to launch an equated monthly installment feature on UPI payments? So, which non-banking financial company? That is your Bob Card Limited. This is the NBFC. Here, the payments can be made via UPI at both online and offline merchants. And these payments can be converted into EMI at the checkout. Next, which insurance company has recently partnered with AU Small Finance Bank to offer life insurance solutions to their customers? It is Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited. This partnership will provide AU Small Finance Bank customers to access the Kotak Life's comprehensive life insurance products that includes your long-term, that includes your retirement, saving and investment plans.
Next, for which country? Our country India has recently extended a budgetary support in the form of a rollover of 50 million treasury, $15 million treasury bills for another year. That is your $50 million T bills. It is to Maldives, right? And this extension has been granted by State Bank of India, correct? In the form of T bills, that is your treasury bills. Next, in September, SEBI they have allowed Dash to sell credit default swaps, a move which aim to boost the liquidity in the corporate bond market. So SEBI they have allowed to sell the credit default swaps of in mutual fund, right? So I repeat, SEBI allowed mutual funds to sell these credit default swaps that will boost liquidity in the corporate bond market. Next, SEBI they have introduced Dash, a process as an alternative to the reserve book building process for voluntarily delisting. So SEBI they have introduced a fixed price process as an alternative to the reserve book building process for voluntarily delisting. As per this new framework, the promoters they can offer to buy back all the publicly held shares at a price at least 15% higher than the fair price of the stock, and this new framework will be applicable to only those companies whose shares are frequently traded. Next, which bank has recently launched Sugam Rin Bhugtan Yojana, that is Sugam scheme. This is a one-time settlement, negotiated settlement scheme to recover non-performing retail loans. It is IDBI Bank, right? And this scheme it runs from 2nd September 2024 to 25th of March 2025, and this scheme will provide distressed borrowers a chance to settle the dues and allow the avoiding the legal complications. Next, which organization or bank has recently provided a loan worth 31,673.79 crore rupees to Mumbai Metropolitan Region Development Authority to fast track the development of 9 key infrastructure projects? It is PFC, that is your Power Finance Corporation, and the major amount sanctioned is 15,071 crore rupees will be allocated to specifically for Thane Borivali twin tunnel project. Do remember that also. Next, which organization recently launched a dedicated foreign portfolio investor outreach cell as a part of an alternative investment fund and foreign portfolio investors department? So which is that organization? It is SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. This was a part of SEBI's AIF, Alternative Investment Fund, and FPI's department, that is Foreign Portfolio Investors Fund department. Next is SEBI. They have made UPI mandatory for individual investors applying for up to Dash in debt security public issue from 1st of November 2025. So SEBI they have made UPI mandatory for individual investors applying for up to 5 lakh rupees in debt security public issues. This will provide these provisions they will basically be applicable from 1st of November 2024, and this will streamline the application process for the public issue of debt securities, non-convertible redeemable preference shares, municipal debt securities, and securities debt instruments. Next, as per NPCI recent notification, auto replenishment of Dash and RuPay National Common Mobility Card will no longer require the standard 24-hour pre-debit notification, right? So the auto replenishment of FASTag, that is NETC FASTag, correct, and NCMC National Common Mobility Card, they won't be requiring any 24-hour standard pre-debit notification, correct? And now you will be seeing these FASTags, they will also be linked to your satellites, right? And it will, you don't have to wait on the highways, directly using the GPS your amount will be deducted. Next, SEBI they have recently announced a new framework to curb the excessive speculation in the Dash with effect from 20th of November 2024. So it is to basically curb the excessive speculation in the stock market, right? And these new rules they will be coming into effect from 20th November. Earlier, SEBI constituted an expert working group to review the regulatory framework to protect the investors and foster the growth of equity derivatives market. Next, which state has recently signed a memorandum of understanding with REC Limited for the financial support of 3 lakh crore rupees for the infrastructure projects? It is the Rajasthan state, right? And according to this MOU, REC Limited they will provide a financial support of
50,000 crore rupees per annum to fund these projects. And this partnership will support the development of both power and non-power infrastructure in the Rajasthan state. Next, which financial institution has recently announced to invest over $272 million to support India's economic growth and sustainability? It is United States International Development Finance Corporation. Here, this investment includes key allocations such as $40 million loan to Mumbai, Maharashtra based APAC Financial Services Private Limited, and DFC is focusing on women empowerment through a $50 million loan to Mumbai, Maharashtra based Incred Financial Services. Next, which state has recently received $162 million loan from Asian Development Bank to enhance the tourism development? It is Himachal Pradesh. Right? Himachal Pradesh is the state that has received this $162 million loan from Asian Development Bank to enhance the tourism development in areas such as the districts of Mandi, Hamirpur, Kullu, Hamirpur, Kangra. These locations, these districts will be benefited the most. Next, which ministry has recently released the new guidelines for handling delays in submitting income tax return? So it is Ministry of Finance. They have recently released the new guidelines. These new guidelines will supersede any previous guidelines and they will be coming into effect from 1st of October 2024. Right? Take a note of it. Next, SEBI, they have recently reduced the training lot size for privately placed infrastructure investment trust to how much? To 25 lakh rupees from 1 crore earlier, right? So in which these are your infrastructure investment trust, right? And SEBI, they have reduced the training lot size for them to 25 lakh rupees, that was earlier 1 crore rupees. Also, these regulations came into effect from the day of their official notification of SEBI, while some of the provisions will come into force 60 days later. Next, which NBFC has recently raised 100 crore rupees from Mizuho Bank Limited of Japan? So it is Satya Micro Capital Limited. They have recently raised 100 crore rupees from Mizuho Bank Limited of Japan. Next, name a new saving bank account that was recently launched by Bank of Baroda for high-end customers desiring premium services. It is Masterstroke, right? And Bank of Baroda also named Sachin Tendulkar as their global brand ambassador. Next, which bank has recently partnered with PhonePe to offer instant credit on UPI to its pre-approved customers through PhonePe application? It is ICICI Bank. And this strategic partnership will enable the pre-approved customers of the ICICI Bank to use the credit line facility for UPI transactions. Under this instant credit offer, eligible customers can access up to 2 lakh rupees of credit with a 45 days repayment period. Next, which organization has recently secured its largest ever foreign currency term loan of $1.265 billion? It is PFC, Power Finance Corporation Limited. Next, which NBFC has recently received the in-principle approval from SEBI to establish a mutual fund business? It is Geo Financial Services Limited. And this final approval for registration will be granted by SEBI subject to the fulfillment of the requirements by Geo Financial Services Limited and BlackRock laid out by SEBI. Next, which airline has recently partnered with SBI Cards and Payment Services to launch two co-branded credit cards, that is KrisFlyer SBI Card and KrisFlyer SBI Card Apex? It is Singapore Airlines that has recently partnered with SBI Cards and Payment Service Limited to launch these two co-branded credit cards. Next, which bank has recently partnered with the International Finance Corporation to provide a loan worth $500 million to help develop a blue finance market in India? It is Axis Bank Limited. This marks the first blue investment, correct? Blue investment is basically for the maritime economy, correct? And this marks the first blue investment by IFC in India and the first blue transaction by a financial institution in the country. Next, which NBFC has recently raised $25 million senior secured debt facility from Asian Development Bank? It is your Vivriti Capital Limited. And this is a 4-year tenure bond and is the first by an NBFC which will be used to expand their green finance portfolio. Next, SEBI, they have changed the nomination rule to allow the holders of mutual funds and demat accounts
to include up to dash nominees, to include up to 10 nominees. Next, which bank has recently approved an in principle loan of 15,000 crore rupees to Andhra Pradesh for developing Amravati as its capital city in collaboration with the Asian Development Bank? It is World Bank, right? The total project cost 49,000 crore rupees, with 15,000 crore rupees being a soft loan from World Bank. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 21 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हो गए हैं। देन हम बात करेंगे संचार साथी एप्लीकेशन NBM 2.0 एंड ICR फैसिलिटी की, जो कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बूस्ट करने का काम करेगा। देन हम बात करेंगे 9वें एडिशन ऑफ टूल किट जो लॉन्च की गई है फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक की। देन फिजिकल सपोर्ट अग्रीमेंट एक अभी साइन किया गया है ताकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी ना आ सके पैसे की। नेक्स्ट थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक MOU की, जो कि कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए अभी साइन किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा। स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है, जिससे आपकी एग्जाम में कोई कमी ना आ सके। ऑल्सो अगर आप नए जुड़े हैं स्टूडेंट्स और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर्स पे। स्टार्टअप इंडिया, इसके 9 साल पूरे हो गए हैं अभी। स्टार्टअप इंडिया को 2016 में लॉन्च किया गया था, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि स्टार्टअप्स को बूस्ट मिल सके। ऑल्सो 16 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। एक और चीज़ याद रखेंगे, ग्लोबली इंडिया 3rd पोजिशन पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। पहले पे USA है, फिर चाइना एंड देन हमारा इंडिया इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टअप्स, करेक्ट। तो अगर हम इंडिया में स्टार्टअप्स की बात करें, 1.59 लाख स्टार्टअप्स हमें देखने को मिले, राइट। अभी तक ये DPIIT के द्वारा फोकस किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स पर, एंड स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को भी इम्प्लीमेंट किया गया था DPIIT के द्वारा, राइट। इसी के अलावा अगर हम बात करें जैसे प्रभाव की, राइट, लेट मी शो यू, भास्कर इनिशिएटिव की। भास्कर क्या है? भास्कर है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। 2024 में लॉन्च किया गया था, सितंबर के महीने में DPIIT के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। ये कटिंग एज इनिशिएटिव है जो कि पार्ट रहेगा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का, राइट। देन अगर बात करें स्टार्टअप इंडिया की, तो इंडियन सिटीज़ जैसे बेंगलोर कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना, मुंबई महाराष्ट्र, दिल्ली NCR रीजन, ये मेजर हब्स हैं फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया, वाइल स्मॉलर सिटी हैव इंक्रीजिंगली कंट्रीब्यूटेड कि एंटरप्रेन्योरियल मोमेंटम में, एज वेल एज ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे इंडिया में स्टूडेंट्स, तो जॉब्स ज़्यादा जनरेट होंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एंड यही बताता है कि इंडिया में, राइट, हमने 16.6 लाख जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होती दिखी बिकॉज ऑफ दीज स्टार्टअप्स, करेक्ट।
देन इसी के बाद स्टार्टअप महाकुंभ की बात करें तो इसका पहला एडिशन 2024 में हुआ था। इसका मेन एम क्या था कि जो स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका एक गेट टुगेदर हो सके, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया जा सके अंडर वन रूफ, ताकि जो ग्रोथ है वो और बेटर हो, लोगों के कनेक्शंस बन सकें, लोगों को वहाँ पे पार्टनर्स मिल सकें, लोगों को एक दूसरे के साथ वहाँ पर बातचीत करके वो एक दूसरे को जान सके एंड आगे ग्रो कर सके, राइट। और ये जो स्टार्टअप महाकुंभ है इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया था असोचम, नेस्कॉम, राइट, टीआई, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडियन वेंचर्स एंड ऑल्टरनेटिव कैपिटल एसोसिएशन के द्वारा मिलके। जो सेकेंड एडिशन है स्टूडेंट्स वो अभी भारत मंडपम में हमें देखने को मिलेगा, अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है प्रभाव फैक्ट बुक, यह भी लॉन्च की गई है पीयूष गोयल जी के द्वारा। एक भारत स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया ऑन द 9th फाउंडेशन डे ऑफ स्टार्टअप इंडिया। हाँ, एक चीज़ और, जो ये नेशनल स्टार्टअप डे था, राइट, इसका कौन सा एडिशन, या फिर सॉरी, स्टार्टअप इंडिया के कितने साल पूरे हो गए हैं? 9 साल पूरे हो गए हैं। प्रभाव की बात करें, प्रभाव फैक्ट बुक ये क्या है? पावरिंग अ रेजिलियंट एंड एजाइल भारत फॉर एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप्स। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया सिडबी के साथ, ताकि एक फंड इस्टेब्लिश किया जा सके, जो फंड रहेगा 100 करोड़ रुपए का, एंड स्टार्टअप्स को ग्रो करने में ये फंड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी स्टार्टअप पॉलिसी फोरम इनके द्वारा लॉन्च किया गया स्टार्टअप बैठक एंड स्टार्टअप बातचीत, ताकि नेशनल स्टार्टअप डे जो कि 16 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है उसको सेलिब्रेट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनके द्वारा संचार साथी एप्लीकेशन NBM 2.0 एंड ICR फैसिलिटी को यहाँ पे लॉन्च किया गया टू बूस्ट द टेलीकॉम कनेक्टिविटी। देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। फिर इनके द्वारा ये 3 चीज़ लॉन्च की गई हैं। पहली है संचार साथी एप्लीकेशन। ये बेसिकली क्या है? संचार साथी एप्लीकेशन ये एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो सीनियर सिटीजन्स को हैं, या फिर हम बोलें सिटीजन्स को, बेटर सिक्योरिटी, टेलीकॉम सिक्योरिटी एंड बेटर सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। अगेंस्ट फ्रॉड यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी इनको, राइट। ये एक्सपेंशन रहेगा NBM 1.0 का, एंड जो कि इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने का काम करेगा। इवन NBM जो 2.0 है, राइट, ये क्या रहेगा? ये बेटर स्पीड्स यहाँ पे इंटरनेट स्पीड्स प्रोवाइड करेगा। 100 Mbps से भी ज़्यादा स्पीड्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। NBM क्या है? नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। ICR फैसिलिटी क्या है? ICR है इंट्रा सर्कल रोमिंग, करेक्ट, राइट, जिससे रोमिंग की सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जाएगी एंड इंप्रूवमेंट होगी कनेक्टिविटी में एट लोअर कॉस्ट, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन, यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, टेलीकॉम सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा, सिटीजन्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड देखेगा। यहाँ पे चक्षु देखने को मिलेंगे इसके कुछ फीचर, जैसे जो रिपोर्ट करेगा सस्पेक्टेड फ्रॉड एंड कम्युनिकेशन को, जैसे कॉल्स हो गई, फ्रॉड कॉल्स हो गई, फ्रॉड SMS हो गए डायरेक्टली फ्रॉम मोबाइल लॉग्स। सिटीजन्स कैन मॉनिटर ऑल मोबाइल कनेक्शंस रजिस्टर्ड इन देयर नेम टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूसेज। यूजर्स ब्लॉक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं लॉस्ट और स्टोलन डिवाइसेस को, एंड ये हेल्प अलाउ करेगा, वेरीफाई करेगा द ऑथेंटिसिटी ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं मनोहर लाल खट्टर जी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इनके द्वारा लॉन्च किया गया टूल किट फॉर द 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण। ये बेसिकली क्या है? सिटीज़ को क्लीन करने के लिए, अर्बन एरियाज को क्लीन करने के लिए ये टूल किट लॉन्च की गई, एंड सिटीज़ को यहाँ पे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे वेरी स्मॉल हो गया, लेस देन 20,000 पॉपुलेशन, स्मॉल 20,000 से 50,000 के बीच में, मीडियम 50,000 से 3 लाख के बीच में, एंड बिग हो गया 3 लाख से 10 लाख के पॉपुलेशन के बीच में, और मीडियम प्लस 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, राइट। यहीं पे आप देखेंगे वेरी स्मॉल सिटीज़ में पंचगनी, पतन, स्मॉल सिटीज़ में वीटा, ससवार, मीडियम सिटीज़ में अंबिकापुर, तिरुपति, न्यू दिल्ली, राइट, बिग सिटीज़ में नोएडा, चंडीगढ़, मिलियन प्लस सिटीज़ में नवी मुंबई, इंदौर एंड सूरत एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडियन आर्म फोर्सेस, इन्होंने एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। इसमें इंडियन आर्मी के द्वारा तो इसको कंडक्ट कराया गया था, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स का इसमें पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला, डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन
सीजी पावर एंड सीएसपीएल, इन तीनों ने अभी एक फिस्कल सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है ताकि इंडिया में जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है ना उसको सपोर्ट किया जा सके। इससे क्या होगा, मान लो कल को अगर इस सेक्टर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कभी भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन दे विल मेक श्योर कि ऐसी कमी हमें देखने को ना मिल सके एंड कोई भी प्रोडक्शन है वो हॉल्ट ना हो, पैसे की कमी ना आए। राइट, यहाँ पे हम देखेंगे कि 7600 करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इवन इंडिया का एक टारगेट है कि हम $500 बिलियन वर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन कर सकें बाय 2030। अगर मैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करूं, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 76,000 करोड़ रुपीज अंडर MEITY। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स FIU, जो कि है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, एंड NHB है नेशनल हाउसिंग बोर्ड। इनके द्वारा भी एक MOU साइन हुआ ताकि एनहेंस कर सके हम कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को। करेक्ट, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए अभी एक हमें MOU देखने को मिला। इससे क्या होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को हम रोक सकेंगे, काउंटर फाइनेंसिंग को रोक सकेंगे, राइट, टेररिज्म को कहीं ना कहीं हम रोक सकेंगे। इससे क्या होगा, जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो आपके हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज में, उनको हम ख़त्म कर सकेंगे। कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिल रही है सेक्टर में उसको रोक सकेंगे। राइट, अंडर रेलेवेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। हम बात करेंगे क्वाकरेली असाइनमेंट वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 की। यूएसए ने यहाँ पे टॉप किया है एंड हमारी कंट्री की रैंक रहेगी 25। राइट, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स क्वाकरेली असाइनमेंट के द्वारा। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसए फर्स्ट, यूके सेकंड, थर्ड जर्मनी, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ कनाडा एंड 25th हमारा इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्किल्स फिट इंडिकेटर पे। फर्स्ट आ जाता है यूके, सेकंड यूएसए, थर्ड कनाडा एंड 37th पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया। इसके बाद बात करें इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेटर की, तो फर्स्ट पोजीशन पे साउथ कोरिया, सेकंड पे इजराइल, थर्ड पे यूएसए एंड 40th पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट है ILO की WESO रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, WESO आपकी रिपोर्ट होती है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। राइट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है एंड इनके द्वारा अभी जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें बताई गया कि उसमें कमी हमें देखने को मिली है, मतलब ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जॉब्स मिल रही हैं, ज़्यादा लोग यहाँ पे एम्प्लॉय हो रहे हैं। राइट, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्लो डाउन कर गई है एट 5%, राइट, फॉर 2025 एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि फर्दर ये डिक्लाइन कर जाएगी टू 4.9% इन 2026। राइट, मतलब ज़्यादा जॉब्स होंगी, ज़्यादा लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। अगर यहीं पे हम डाटा देखें, जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है इट इज़ स्टेबल एट 3.2% 2024-25 में। वहीं पे इन्फ्लेशन 6.7% थी जो 2023 में वो 5.9% तक आ गई है 2024 में। ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, ये 61% रहेगा 2024 में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, गिलबर्ट हुआंगबो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल रहेंगे। जनेवा स्विट्जरलैंड यहाँ पे हेडक्वार्टर है एंड 1919 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेशनल इकोनॉमिक रिकवरी पे। ये हमने देखा कि 2024 में 6.2%, 2025 में 5.8% तक यहाँ पे GDP ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर। ये भी विजिट पे थे स्पेन में फ्रॉम 13 to 14th ऑफ जनवरी। 2 डे लॉन्ग ये विजिट थी एंड इन्होंने इंडिया और स्पेन ने मिलकर यहाँ पे MOU साइन किए इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। मार्क करके चलेंगे एंड यहीं पे याद रखेंगे 2026 को ड्यूल ईयर यहाँ पे डेजिग्नेट किया ताकि कल्चरल एक्सचेंज, टूरिज्म, एडवांसमेंट इन AI बिटवीन दीज टू नेशंस को सेलिब्रेट किया जा सके। इवन डॉक्टर S जयशंकर ने 9th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेनिश एम्बेसडर्स को एड्रेस किया जो कि मैड्रिड स्पेन में हुई थी, जिसकी थीम थी अ फॉरेन पॉलिसी विद आवर ओन आइडेंटिटी।
नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी नाइजीरिया मेंबर बन गया है ब्रिक्स का, जो कि 9th पार्टनर कंट्री बना है। मार्क करेंगे 9th पार्टनर कंट्री नाइजीरिया। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है? ब्राज़ील के पास है। इससे पहले किसके पास थी? रशिया के पास थी। ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ हुई थी? राइट, वो हुई थी कजान में, रशिया में। राइट, एक कजान डिक्लेरेशन भी वहाँ पे साइन किया गया था। सो कमिंग बैक, नाइजीरिया 9वां पार्टनर कंट्री बन गया है ब्रिक्स का। इससे पहले अभी इंडोनेशिया वो फुल टाइम मेंबर बना था। राइट, फुल टाइम मेंबर बना था ऑफ ब्रिक्स। लेट मी शो यू हियर, इंडोनेशिया full member of BRICS bloc. With this, it has become the first Southeast Asian country to join this bloc. Also 2024 जनवरी में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई ये ऑफिशियली ब्रिक्स ब्लॉक के मेंबर बन गए थे। एंड अदर पार्टनर कंट्रीज देखें, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान, ये आपके पार्टनर कंट्री रहेंगे। और अभी 9वां पार्टनर कंट्री कौन बन गया है? नाइजीरिया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है यूएसए ने रिमूव करा BARC, IGCAR, IREL, इनको रिस्ट्रिक्टिव एंटिटी लिस्ट से। देखो यूएसए ने, जब इंडिया ने 1998 में पोखरान राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट करे थे ना, उसके बाद कई सारी एंटिटीज़ पर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप सर्टेन सर्टिफिकेशंस नहीं ले सकते, आप सर्टेन केमिकल्स नहीं ले सकते, आप इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप ये टेस्ट नहीं करते, सो एंड सो। राइट, तो अब क्या है, यूएसए ने वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। तो इससे क्या होगा, इंडिया एंड यूएसए के बीच में इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी यहाँ पे हमें कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। दोनों साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा पैसा इस सेक्टर में फंड होता हुआ देखेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस होगा ज़्यादा से ज़्यादा। करेक्ट। एंड यूएसए ने अभी BARC, जो कि है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, इसकी रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। IGCAR क्या है आपका? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में, उस पर हटा दिया है। एंड IREL है आपका इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, जो कि मुंबई महाराष्ट्र है। इन तीनों पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। अभी श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा एक सुनिश्चित लाभ सेविंग प्लान को लॉन्च किया गया, जो कि एक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, जो कि रिटर्न्स गारंटी करता है अप टू 668% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। ये प्लान ऑफर करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स। इंडिविजुअल्स एज 30 to 60 ईयर्स आर एलिजिबल फॉर दिस प्लान विद अ प्रीमियम स्टार्टिंग विद ऑफ 30,000 रुपीज। नेक्स्ट, इंडिया की GDP ग्रोथ लाइकली टू रीच 6.7% इन FY26 एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय क्रिसल। यहाँ पे कई जियोपॉलिटिकल रीजंस फोकस करेंगे। इवन इंडिया की बात करें तो RBI का रेट कट, लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड नॉर्मल मॉनसून यहाँ पे काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर देखने को मिलेंगे। क्रिसिल्स रेटिंग की मैं बात करूं, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? सुबोध राय। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई महाराष्ट्र में। 1987 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया रॉबर्ट जराड रावीज का टेन्योर एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BSNL एंड MTNL। 3 महीने के लिए इनका एक्सटेंशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। पहले 15 जनवरी को रिटायर हो रहे थे, अब 14 अप्रैल को ये रिटायर हो गए। मूविंग ऑन, बुक्स पर आ जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स। अभी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई, पार्लियामेंट, पावर एंड फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। इस बुक को ऑथर किया गया है डॉक्टर KS चौहान के द्वारा, जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं एट वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव, न्यू दिल्ली। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट एक और बुक है अमिताभ घोष की नई बुक, दैट इज वाइल्ड फिक्शंस। ये एड्रेस करती है क्लाइमेट चेंजेस को एंड सोसाइटल इश्यूज को। इस बुक को लॉन्च किया गया एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली, जो कि है यशोभूमि, ड्यूरिंग द 41st डॉक्टर CD देशमुख मेमोरियल लेक्चर। राइट, फोर्थ एस्टेट इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया था, वाइल्ड फिक्शंस को, जो कि ऑथर की गई है अमिताभ घोष जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे, जो कि है NDRF रेजिंग डे। 19 जनवरी को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। एंड अभी याद रखेंगे हमने 20वां एडिशन ऑफ NDRF रेजिंग डे ऑब्जर्व किया था। ये ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली टू मार्क द फाउंडेशन और फाउंडिंग ऑफ NDRF, जो कि एक स्पेशल फोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। एंड डिजास्टर के टाइम जो लोग मदद करते हैं, राइट, सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, वो NDRF फोर्स के ही लोग होते हैं। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसी के अलावा अमित शाह जी यहाँ पर एक चीफ गेस्ट है ड्यूरिंग द 20th रेजिंग डे सेरेमनी ऑफ NDRF। राइट, इसी के दौरान 10th बटालियन ऑफ NDRF यहाँ पे इनॉग्रेट की गई, एज वेल एज इनॉग्रेट किया गया नेशनल साउथ कैंपस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट।
तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, राइट। एंड ये आज का हमारा सेशन था स्टूडेंट्स। पसंद आया तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो, अभी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रैवल कार्ड, जो कि 6 करेंसीज को यहाँ पे सपोर्ट करता है। वो है पंजाब नेशनल बैंक। कौन कौन सी 6 करेंसीज हैं वो? डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, आपका कैनेडियन डॉलर, देन दिरहम जो कि यूएई की है, एंड सिंगापुर डॉलर। तो ये 6 करेंसीज यहाँ पे सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, किस एनबीएफसी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया रुपए के साथ टू लॉन्च ईएमआई फीचर आपकी यूपीआई पेमेंट्स पर? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये? वो है बैंक ऑफ या फिर बॉब कार्ड, जो कि एक सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, राइट, होली ओन्ड सब्सिडरी। तो इनके द्वारा ये ईएमआई का फीचर लॉन्च किया गया है यूपीआई पर। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी पार्टनर किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टू ऑफर इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू इट्स कस्टमर्स? तो किसके द्वारा? वो है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे ऑफर किया गया। नेक्स्ट, किस फॉर विच कंट्री इंडिया ने अभी रिसेंटली एक्सटेंड किया अ बजटरी सपोर्ट ऑफ $50 मिलियन? ये टी बिल्स के फॉर्मेट में रहेगा 1 साल के लिए। और तो मालदीव्स को यहाँ पे $50 मिलियन ट्री बिल्स के तौर पे यहाँ पे दिए गए एज अ मॉनेटरी सपोर्ट। नेक्स्ट, सेबी ने अभी अलाउ किया डैश टू सेल सीडीएस, जो कि है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, अ मूव जो कि बूस्ट करेगी लिक्विडिटी को इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। तो इन्होंने अलाउ किया है म्यूचुअल फंड्स को टू सेल द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। नेक्स्ट, सेबी ने अभी इंट्रोड्यूस किया डैश प्रोसेस एज एन ऑल्टरनेटिव टू द रिजर्व बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर वॉलंटरली डीलिस्टिंग। तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस को एज एन ऑल्टरनेटिव टू द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया सुगम स्कीम, जो कि है सुगम ऋण भुगतान योजना, जो कि एक वन टाइम सेटलमेंट नेगोशिएटेड सेटलमेंट स्कीम है टू रिकवर द नॉन परफॉर्मिंग रिटेल लोन्स। तो वो कौन सा बैंक रहेगा? वो है आईडीबीआई बैंक। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने अभी प्रोवाइड किया एक लोन वर्थ 31,673 करोड़ रुपीस का टू मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ताकि जो डेवलपमेंट है की 9 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से उनको बूस्ट मिल सके? तो वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अभी प्रोवाइड किया है ये लोन। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लॉन्च किया एक डेडिकेटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आउटरीच सेल एज अ पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स डिपार्टमेंट? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सेबी ने ही अभी यूपीआई मैंडेटरी कर दिया फॉर इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स अप्लाइंग फॉर अप टू 5 लाख रुपीज इन डेट सिक्योरिटी पब्लिक इशूज 1 नवंबर 2024 से। नेक्स्ट है एनपीसीआई। इन्होंने रिसेंट नोटिफिकेशन निकाला अबाउट द ऑटो रिप्लेनिशमेंट ऑफ एनईटीसी फास्टैग एंड जो रुपए का एनसीएमसी कार्ड है, उन दोनों को ऑटो यहाँ पे रिप्लेनिश हो जाएगा वो। एंड 24 घंटे का प्री डेबिट नोटिफिकेशन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आएगा, उसके बिना भी हो जाएगा। नेक्स्ट, सेबी ने अभी मैंडेट किया और हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ नया फ्रेमवर्क टू कर्ब द एक्सेसिव स्पेकुलेशन इन द स्टॉक मार्केट विद इफेक्ट फ्रॉम 20th of November 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया आरईसी लिमिटेड के साथ फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 3 लाख करोड़ रुपीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? तो ये राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अनाउंस किया टू इन्वेस्ट $272 मिलियन टू सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी? वो है यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी रिसीव किया $162 मिलियन का लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक टू एनहेंस टूरिज्म डेवलपमेंट? तो वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली रिलीज की नई गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग डिलेज इन सबमिटिंग इनकम टैक्स रिटर्न? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, सेबी ने अभी रिसेंटली रिड्यूस कर दिया द ट्रेडिंग लॉट साइज फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टू 25 लाख रुपीज, जो कि पहले 1 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एनबीएफसी ने अभी रिसेंटली या फिर किस एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने अभी रिसेंटली रेज किए 100 करोड़ रुपीस फ्रॉम मिजुहो बैंक लिमिटेड ऑफ जापान? तो कौन से एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने रेज किए हैं ये 100 करोड़ रुपए? वो है सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम अ न्यू सेविंग बैंक अकाउंट, जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा फॉर हाई एंड कस्टमर्स डिजायरिंग प्रीमियम सर्विसेज? तो वो है मास्टर स्ट्रोक।
नेक्स्ट एंड यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया फ़ोन पे के साथ टू ऑफर इंस्टेंट क्रेडिट ऑन यूपीआई टू इट्स प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स थ्रू फ़ोन पे एप्लीकेशन, तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योर किया लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी लोन टर्म ऑफ 1.265 बिलियन डॉलर, तो वो है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, किस एनबीएफसी ने अभी रिसेंटली रिवाइज किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू एस्टेब्लिश अ म्यूचुअल फंड बिजनेस, तो वो है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एयरलाइन ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के साथ टू लॉन्च 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, जो कि है क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड एंड क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड एपेक्स को। तो किस एयरलाइन के द्वारा यहाँ पे ये पार्टनर किया गया है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के साथ, वो है सिंगापुर एयरलाइंस। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी पार्टनर किया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ टू प्रोवाइड अ लोन वर्थ $500 मिलियन टू हेल्प डेवलप ब्लू फाइनेंस मार्केट इन इंडिया। ब्लू फाइनेंस है बेसिकली आपकी वाटर से रिलेटेड, ओशन, सीज, मैरीटाइम इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो एक्सिस बैंक ने यहाँ पे रिसेंटली आईएफसी के साथ पार्टनर किया फॉर अ लोन ऑफ $500 मिलियन ताकि ब्लू फाइनेंस मार्केट को इंडिया में डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एनबीएफसी ने रेज किया $25 मिलियन सीनियर सिक्योर्ड डेट फैसिलिटी के थ्रू फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो है विवृति कैपिटल लिमिटेड। 4 ईयर का बॉन्ड टर्म रहेगा ये। नेक्स्ट, सेबी ने चेंज कर दिया नॉमिनेशन रूल टू अलाउ द होल्डर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड डीमेट अकाउंट्स टू इंक्लूड अप टू 10 नॉमिनीज। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, राइट। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया इन प्रिंसिपल लोन ऑफ 15,000 करोड़ रुपीस टू आंध्र प्रदेश, ताकि अमरावती सिटी को, जो कि कैपिटल सिटी है आंध्र प्रदेश की, उसको एज अ ग्रीन सिटी यहाँ पे डेवलप किया जा सके विद सपोर्ट फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो किस बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया 15,000 करोड़ रुपए का लोन, तो वो है वर्ल्ड बैंक ने।